First of all, continue with chapter number 3, which is equilibrium of a particle, and we will solve the exercise problems, maybe one or two exercise problem from the three-dimensional force system जो कि हमने last week शुरू किया था. Now, three-dimensional force system में क्या होता है कि you are going to apply the condition of equilibrium in which three-dimensional forces are acting on a particle. Now, those conditions of equilibrium are discussed in the previous lecture as well, that there shouldn't be any unbalanced force acting on that particle. It means that summation F should be equal to 0, and then you are going to apply it along x-axis, summation Fx equal to 0, summation Fy equal to 0, and summation Fz equal to 0. So last time हमने कुछ एग्जांपल्स इस टॉपिक से रेलेवेंट सॉल्व की थी. आज हम एक या दो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करते हैं, एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक विच इज चैप्टर नंबर 4, फोर्स सिस्टम रिजल्टेंट्स. Okay, starting with problem 3-47. एक अरेंजमेंट आपको शो किया गया है which is being used for catching fish from the sea or river. The shear leg derrick is used to haul the 200 kg net of fish onto the dock. You need to determine the compressive force. Now, एक चीज इसमें जो गिवन है वो ये कि इससे पहले तक हम जो भी फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते रहे हैं, जनरली हमारे पास केबल में हमेशा टेंशन फोर्स आती थी. यहाँ आपको ये दो लेग्स गिवन है ए बी एंड सी बी, इसमें कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रही हैं. अब कंप्रेसिव फोर्स आप फ्री बॉडी डायग्राम पे कैसे मॉडल करते हैं, कोई स्टूडेंट बता सकता है? इफ यू वांट टू मॉडल दीज कंप्रेसिव फोर्सेस ऑन दिस फ्री बॉडी डायग्राम, हाउ यू आर गोइंग टू मॉडल इट? किस डायरेक्शन में ये ड्रॉ की जाएंगी? जी, आवाज आ रही है मेरी या आवाज नहीं पहुंच रही? सर टुवर्ड्स बी. टूवर्ड्स बी, क्योंकि इससे पहले अगर आपको याद हो हम जब भी टेंशन फोर्स की बात करते हैं तो हमने बार बार जिक्र किया है कि द टेंसाइल फोर्सेस आर ऑलवेज ड्रॉन अवे फ्रॉम दैट पार्टिकल जिसकी भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो. यहाँ आपको गिवन है कि ये जो लेग्स हैं ए बी एंड सी बी, इसमें कंप्रेसिव फोर्सेस डेवलप हो रही हैं. सो वंस यू आर drawing the free body diagram of B, you are going to show these forces being drawn towards this particle B rather than away from this particle. So आपके पास एक अदद ये फोर्स आ जाएगी जिसको आपने फोर्स AB कहा है, और आपके पास फोर्स CB आ जाएगी. ये आपके पास दो कंप्रेसिव फोर्सेस आ जाएंगी. इसके अलावा आपके पास इस केबल में टेंशन आएगी जिसको आपने मॉडल किया है एज FBD, और चूंकि ये टेंसाइल फोर्स है, टेंशन है इन दिस केबल, सो इट इज बीइंग ड्रॉन अवे फ्रॉम दैट पार्टिकल भी, जिस तरह से पहले हम टेंशन को जो है वो ड्रॉ करते रहे. एंड फाइनली देयर इज गोइंग टू बी द वेट ऑफ दिस पार्टिकल और द वेट ऑफ दिस फिश जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा. सो ओवरऑल यू आर गोइंग टू हैव 4 forces acting at point B. So once you are drawing the free body diagram, these are the 4 forces which are being shown on particle B. In order to apply the conditions of equilibrium, it is necessary that we should have written these forces in terms of their Cartesian notation. So in order to write them in terms of Cartesian notation, we would be requiring the coordinates of points A, B, C and D. So starting with point A, अगर हम point A से start करें, the coordinates of point A are going to be 2, 0, 0. So आपके पास point A के जो coordinates हैं वो 2, 0, 0 आ जाएंगे. इसी तरह अगर हम coordinates of point C की बात करें, this is point C. So point C के जो coordinates हैं वो उसी हिसाब से सिर्फ x coordinate change होगा, -2, 0, 0. ये आपके पास point C के जो है वो coordinates आ जाएंगे. Can anyone of you tell me what are the coordinates of point B? Sir, 0, 4, 4. Okay, the x coordinate is 0, y coordinate is 4, as well as the z coordinate which is also 4. So आपके पास A, B और C के coordinates आ गए हैं. Finally आपके पास point D बचा है. So once you see or once you take a look at this point D, इसके coordinates जो है वो x coordinate 0 है, y coordinate की अगर मैं बात करूँ तो ये 5.6 है, but towards the negative y axis, so I can write it as -5.6, और z coordinate भी मेरे पास 0 आ गया. So 0 -5.6 0
are going to be the coordinates of point D. So आपके पास चारों forces के लिए coordinates आ गए. Now you are going to apply the conditions of equilibrium by first writing these forces in terms of their Cartesian notation. So FAB को अगर आप Cartesian notation में लिखना चाहते हैं, so it is going to be like this, which is FAB times UAB, which is the unit vector along AB. और unit vector आपने कैसे लिखा है? You have defined a position vector from A towards B और उसको उसके magnitude पे divide कर दिए. You are going to get FAB in terms of its Cartesian notation. Similarly, FCB की बात करें तो उसके लिए भी आपने यूनिट वेक्टर UCB का इस्तेमाल किया है. इसी तरह FBD की बात करें तो आपने यूनिट वेक्टर UBD का इस्तेमाल किया है. तो आपके पास तीनों फोर्सेस जो है वो कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में आ गई हैं. वेट को भी आपने इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन नोटेशन लिख लिया है, which is W equal to -1962 K. Okay, now once all these forces are being written in terms of Cartesian notation, then you are going to apply the conditions of equilibrium, which is summation fx equal to 0, summation fy equal to 0 and summation fz equal to 0. जिसमें summation fx जब आप लिख रहे हैं तो आपने सारे I components को सम किया है, समेशन एफ वाई में आपने तमाम के जे कंपोनेंट्स को सम किया है एंड समेशन एफ के में आपने तमाम के कंपोनेंट्स को जो है वो सम किया है. नाउ यू हैव थ्री इक्वेशंस एंड थ्री अननोन्स. So once you solve these equations simultaneously, you are going to get the values of these three unknown forces, FBD, which comes out to be 3.65 kilonewton, FCB and FAB, both of them comes out to be 2.53 kilonewton. So I hope that the whole problem is clear to all of you. कोई point अगर आपको ना समझ आए हो, you can always ask it now. Okay, no question regarding this problem 3-47. Chale, so if you have no queries, let us move to the final problem of this topic, or rather this chapter, and then we will start our new chapter. This is problem 3-58. You need to determine the tension developed in cables AB, AC and AD required for the equilibrium of this 75 kg cylinder. So this cylinder is being supported by three cables, AB, AC and AD. You need to find out the tensions in these three cables for the equilibrium of this particle or cylinder. Okay, in order to write it in terms of Cartesian notation, we will be requiring the coordinates of point A, B, C and D. अगर मैं point A की बात करूँ तो since it is the origin of the coordinate system, so it would have coordinates 0, 0, 0. Okay, the next one is point B. In order to reach point B from the origin, I need to travel this much amount along the y-axis, this much of amount along the negative x-axis, and this much of amount along the positive z-axis. So the coordinates of point B would comes out to be -1, and then the y coordinate is 1.5, and the z coordinate is 3. So -1, 1.5 and 3 are going to be the x, y, z coordinates of point B. Moving to point C, in order to reach point C, we need to travel this much of amount along the negative y-axis, this much of amount along the negative x-axis, and this much of amount along the positive z-axis. So the coordinates of point C would become -1, -2 and 2. ये आपके पास point C के coordinates आ जाएंगे. Similarly, अगर मैं point D की बात करूं तो since point D lies within the xy plane, so in order to reach point B, I need to travel this much of amount along the positive x-axis and this much of amount along the negative y-axis. So coordinates of point D would comes out to be 3, -4 and 0. So coordinates आपने तमाम के find out कर लिए. Now you need to draw the free body diagram of point A. So this is going to be the force which is named as FAB acting in this cable AB. Then you have another force which is this FAC acting in this cable, and finally this force which is FAD acting in cable AD. All these three cables are supporting the weight which is acting downward. So weight would be acting downward, which is equal to 75 into 9.81
न्यूटन। तो आपके पास ये फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। तमाम फोर्सेस को यू नीड टू राइट देम इन टर्म्स ऑफ देयर कार्टेशियन नोटेशन। सो स्टार्टिंग विद एफ ए बी, आप वही यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, यू ए बी मल्टीप्लाई बाय एफ ए बी से आप एफ ए बी को कार्टेशियन नोटेशन में लिखेंगे। देन एफ ए सी इज बीइंग रिटर्न in terms of Cartesian notation, FAD is being written, and finally the weight. So these are the four forces which are being written in terms of their Cartesian notation. Now applying the conditions of equilibrium, summation fx, summation fy and summation fz equal to 0, आपके पास तीन इक्वेशंस आएंगी, तीन ही आपके पास अननोन्स हैं. So solving these equations simultaneously will give you the value of these unknown forces. FAD would comes out to be 416 Newton, FAC would comes out to be 35.5 Newton, and FAB would comes out to be 830.9 Newton. So is it clear to all of you? Almost exercise के सारे problems इसी एक ही तरह के हैं. तो अगर हमने दो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए तो आई अज्यूम कि बाकी प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं खुद. So any question relevant to this topic जो कि आपको ना समझ आया हो, you can always ask now, especially आज के लेक्चर के हवाले से अभी तक कोई चीज जो आपको क्लियर ना हो, you can always ask it now. क्लियर है तमाम चीजें? सर ये FAB में y का जो कंपोनेंट 1.5 था सर, ये तो समझा दो. देखें अभी जैसे हमने बात की थी कि पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से वाई एक्सिस में आप यहां से लेके यहां तक ट्रेवल करेंगे, ऐसे ही है? यस सर. तो ये डायमेंशन आपको क्या गिवन है? हाँ सही, ठीक है सर. 1.5. ठीक है, चलें दोस्तों, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है. इंशाल्लाह आपको इस कोर्स की पहली असाइनमेंट मोस्ट लाइकली आज मैं आपको MS टीम्स के ऊपर जो है वो अपलोड कर दूंगा. आपको इसी चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे जो कि आपने सॉल्व करके MS टीम्स पे ही जो है वो सबमिट करवाने होंगे बाय संडे. सो आपके पास 4-5 दिन हैं, आराम से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बाय हैंड वो प्रॉब्लम सॉल्व हैं. तमाम इंस्ट्रक्शंस आपको MS टीम्स पे जो है वो अपलोड कर दूंगा मैं आज किसी वक्त. तो आपको जो है वो असाइनमेंट विजिबल हो जाएगी. उसकी सबमिशन डेडलाइन जो है वो संडे की होगी. 4 या 5 प्रॉब्लम्स होंगे इस चैप्टर नंबर 3 के हवाले से. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर.